Good morning, Ram. Good morning, ma'am. Good morning. जी मैम, तो दो बस ही लोग हैं आज तो हाँ हाँ, वेट करते वेट हैं। कर लेते हैं 5-10 मिनट। हाँ, 5 मिनट वेट करते हैं। जी। Okay. Day 9, Loving Your Inner Child, Part 2. Today, you use mirror work to forgive the past and begin to love the beautiful child within. How are you and your inner child doing today? Are you getting to know each other a little better? I have found that working with the inner child is extremely valuable in helping to heal the hurts of the past. We are not always in touch with the feelings of the frightened little child within us. If your childhood was full of fear and physical or verbal battles, you may have a habit of mentally beating yourself up. When you do this, you are continuing to treat your inner child in much the same way. The child inside, however, has no place to go. Many of us have an inner child who is lost and lonely and feels rejected. Perhaps the only contact we have had with our inner child for a long time is to scold and criticize it. Then we wonder why we are unhappy. We cannot reject a part of ourselves and still be in harmony within. Today, let's use our mirror work to move beyond our parents' limitations and connect with the little lost child inside. Let's forgive the past and begin to love this beautiful child within. This child needs to know that we care. So basically, it's no, like we read in the last chapter, it's not like कि जरूरी है कि हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके लिए हम अपने आप को ब्लेम करते हो. कई बार अननोइंगली भी हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे अपने सिबलिंग्स हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, या मतलब प्यार में भी वो कभी कभी हमें क्रिटिसाइज करते हैं. मतलब नोइंगली अननोइंगली कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हर्ट कर जाती हैं एज अ चाइल्ड, एंड वी dwell upon it, and we keep telling ourselves कि no, you are not good enough. हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, स्कोल्ड करते हैं. तो वो फीलिंग जो है वो हमारे इनर चाइल्ड को अंदर ही अंदर दबा देती है, एंड देन वी काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम आवर सेल्स ओनली. सो ये जो इसमें लाइन लिखी है कि अगर हम अपने किसी बॉडी पार्ट को रिजेक्ट करेंगे, अगर हम अपने किसी किसी भी अपने पार्ट को अगर हम रिजेक्ट करते हैं, तो क्या वो हमारे साथ हार्मनी में वर्क कर सकता है? नहीं. उसी तरह से अगर हम अपने इनर चाइल्ड को रिजेक्ट करते हैं, तो वो भी हमारे साथ हार्मनी में वर्क नहीं कर सकता है. So today, let's use our mirror work to move beyond our parents' limitations and connect with the lost child inside. So we are connecting with the child, and the child needs to know that we care. Most of us have buried many feelings and hurts from the past. Learning to love your inner child is going to take time. Take all the time you need. Return to these exercises again and again. You will get there, I promise. Your inner child still carries the beliefs you developed early on. If your parents had rigid ideas and you are now very hard on yourself, or you tend to build walls around you, your inner child is probably still following your parents' rules. If you continue to pick on yourself for every mistake, it must be a very scary for your inner child to wake up in the morning thinking, what is my parent going to yell at about me today? So a lot of us have grown up with, a lot of strictness in the house, or a lot of
कांस्टेंट टेलिंग कि ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे कर, इतना आसान थोड़ी ये सब करना। एक एक जो एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। और बिकॉज वी grew up in a world wherein there was a lot of disbelief, there was a lot of scarcity, there was always this feeling that you have to do much better in life, you whatever you're doing is not good enough. And that is a belief, that was a overarching belief in this time when we were growing up, and that has kind of stuck to ourselves from our childhood itself. तो अगर हम रोज सुबह उठ के ये सोच रहे हैं कि आज आज हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, या आज हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या आज हमारे बारे में हमारा पार्टनर क्या सोचेगा, तो हम अपने ही आप को क्वेश्चन करते हुए हर काम कर रहे हैं कि अरे हम सही नहीं कर पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दिला पा रहे हैं कि यस यू आर इनफ, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग योर बेस्ट. So if we are thinking like that every morning or every now and then कि आज मुझे किस चीज के लिए डांट पड़ने वाली है, तो मेरा इनर चाइल्ड हमेशा उस फियर के अंदर रहेगा that something whatever I'm doing is not right. Well, our parents did to what our parents did to us in the past was a product of their consciousness. Now we are the parents. We are using our conscious now. If we are still refusing to take care of your inner child, you are stuck in your own resentment. So please understand that whatever our parents did was not because, or if our parents or our society, our families at large did to us, was not because they wanted anything bad for us, or because they are bad people, or because they did not know how to do it. They probably did it unknowingly, because that's how things were at that time. And whatever they did, वो उनकी कॉन्शियसनेस ने उनको गाइड किया कि ये हमारे बच्चों के लिए सही है, ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए सही है, और उन्होंने उस टाइम के लिए हमारे लिए बेस्ट टू बेस्ट चीज करी. बट नाउ टुडे, आज हम अपने पेरेंट खुद हैं, हम अपने इनर चाइल्ड के पेरेंट हम हैं, और हमें अपने इनर चाइल्ड को कैसे उभारना है, कैसे प्यार देना है, कैसे संभालना है, कैसे अश्योरेंस देनी है, वो अब हम पे डिपेंड करता है. अगर आज हम इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को शन अवे करेंगे कि नहीं ये तो फालतू की बातें, ऐसे थोड़ी कुछ होता है, तो हम वापस से अपने इनर चाइल्ड को इग्नोर ही कर रहे हैं. हम आज अगर हम इस मॉर्निंग में, आज अगर हम साथ में बैठ के ये चीज सीख रहे हैं और ये चीज सुन रहे हैं, दैट इज प्रोबेबली समवेयर our inner subconscious, our inner child wants us to reconnect with them. ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस कि हम ये सब साथ में बैठ के बुक पढ़ रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं. इट इज बिकॉज समवेयर द यूनिवर्स वांट्स अस टू गेट कनेक्टेड फ्रॉम डीप विद इन. So let us not just put it on the side as some other concept in life. Let us apply it in our lives. Let us reconnect with our inner child. For now, visualize that you are taking your inner child by the hand and going everywhere together for a few days. See what joyous experiences you can have. This may sound silly, but please try it. It really works. Create a wonderful life for yourself and your inner child. The universe will respond, and you will find ways to heal your inner child and the adult you. So जैसे छोटे बच्चों को हम हाथ पकड़ के कहीं ले जाते हैं ना, तो हमें हमें कितनी खुशी होती है कि आज हम अपने बच्चों को लेके कहीं जा रहे हैं, या हम उनको कोई नई चीज दिखा रहे हैं. तो हमारा, जब बच्चे हमारे साथ होते हैं, तब हमारा कोई भी चीज देखने का नजरिया बहुत ही डिफरेंट हो जाता है. हम उस एक्सपीरियंस में या उस चीज में जो हम देख रहे हैं, उसमें हम एक फन ढूंढते हैं, हम एक एक एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, हम उसको एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से अप्रोच करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें
मान लो हमें किसी काम से शॉपिंग मॉल जाना है कोई चीज खरीदने के लिए, राइट नाउ हम अगर अकेले जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा कि अच्छा हाँ हमें वहां जाना है और हमें जाके स्ट्रेट अवे उस शॉप पे जाना है, ये चीज लेनी है, ऐसे से ये 3-4 काम करने हैं और हमें वापस आ जाना है। पर अगर हम अपने बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा हम पहले कहीं पे एक उसको कोई टॉय दिखा दे, दिला दें उसको, एक पहले एक टॉय शॉप ले जाएं, फिर वापसी में उसको एक आइसक्रीम खिला दें। तो वी आर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर चेंजिंग द वे we are doing experiencing one situation. So उसी तरह से मतलब we are trying to bring in the fun element whenever we are taking our child with us. उसी तरह for a few days आज के बाद में, एंड आई वुड से फॉर एवर इन योर लाइफ, कहीं भी आप जा रहे हो, कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप इमेजिन करो आप अपने इनर चाइल्ड को हाथ पकड़ के अपने साथ ले जा रहे हो। आप जहां भी जा रहे हो आपका इनर चाइल्ड आपके साथ है, आपने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो आपके साथ में है। तो आप उस एक्सपीरियंस को एक बहुत ही लाइट वे में एक्सपीरियंस करोगे, आप बहुत ही खुश होगे उस, और आप उसके लिए एक्साइटेड होगे, आप उसके लिए छोटी, उसके अंदर की छोटी छोटी खुशी को ढूंढोगे और बोलोगे देखो बेटा, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। आप अगर मान लो ट्रैफिक में भी फंसे होगे तो आप, अगर जैसे आपके साथ आपके बच्चे और आप ट्रैफिक में फंसे हो तो आप उसको ये थोड़ी बोलते हो अरे कितना ट्रैफिक है कितना ट्रैफिक है, ओ नो मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। पर आप उसको क्या बोलोगे, अरे देखो बेटा, आप उसको समझाने की कोशिश करोगे कि यू नो देखो बेटा बाहर देखो, वो पास वाली कार में अंकल को देखो, या देखो अच्छा लेट्स काउंट कि जैसे कितनी कितनी कार्स हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की। या हम ये बोलते हैं ना कि अच्छा चलो आई स्पाई वी प्ले दिस गेम, विल प्ले लिटिल लिटिल गेम्स विद किड्स इन द कार व्हेन दे आर व्हेन वी आर स्टक इन अ ट्रैफिक। हम उनको थोड़ी ये महसूस कराते हैं कि अरे कितना ट्रैफिक है और हम हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है और हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मतलब हम ये थॉट प्रोसेस अपने आप के लिए क्रिएट कर रहे हैं जब हम कोई सिचुएशन को डील करते हैं और हम चिंता में होते हैं, हम वरी करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं। तो हम अपने ही एट दैट टाइम अपने इनर चाइल्ड को बोल रहे हैं कि बेटा लाइफ इज very difficult, life is very 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 problematic, life is full of fears, life is full of limitations. So now on, when we are in that situation we think कि हमारे साथ हमारा inner child बैठा हुआ है, तो हमें उसको क्या बोलना है, हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है, और वही एटीट्यूड हमें अपने अपने आसपास और अपने साथ रखना है फॉर एवर नाउ। सो नाउ वेन एवर वी आर इन दिस सिचुएशन ऑलवेज रिमेंबर कि मेरे पास मेरा इनर चाइल्ड बैठा हुआ है, वो मेरे अंदर बैठा हुआ है, और अगर मैं उसको फियर, लिमिटेशंस, कंप्लेन्स महसूस कराऊंगा तो वो वैसा ही फील करेगा। तो क्या उसको अच्छा लग रहा होगा, क्या वो खुश होगा, क्या वो सब चीज अच्छे से कर पाएगा जो मैं करना चाहता हूँ? नो, द आंसर इज नो, देर इज नो हार्मनी देन, the inner child will never be able to connect with you. So from today, let us assume that an inner child is always with us, और हम जहां भी जा रहे हैं अपने साथ अपने छोटे से बच्चे को लेके जा रहे हैं। No matter what your early childhood was like, happy or sad, you and only you are in charge of your life now. From now on, you can spend your time blaming your parents or you can embrace love. Love is the biggest eraser I know. It erases even the deepest and most painful memories because love goes deeper than anything else. Think for a moment. Do you want a life of pain or one of joy? The choice and the power are within you. Look into your eyes and love yourself and the child within. Today, let's affirm I love my inner child and I am in charge of my life now. So, from today onwards, we affirm that we are in charge of our lives, no matter what has happened in our past, no matter how good, bad, ugly, beautiful it was, it is all gone. What we have today is now.
We are living in the power of now. And from today onwards, we are the only ones in charge of our life. कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है, कोई नहीं है जो हमारी लाइफ का इंचार्ज है. इट इज ओनली वी एंड आवरसेल्व्स. हम अपने थॉट प्रोसेस को खुद कंट्रोल करते हैं और हम अपने इनर चाइल्ड को आज से बोल रहे हैं दैट यस, वी लव यू एंड वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ यू. योर डे 9 mirror work exercise. Number 1, go to your bathroom mirror and look at the picture of yourself as a child that you taped yesterday. Take a moment right now and tell your inner child that you care. Say these affirmations: I care about you. I love you. I really, really love you. Number 3, sit in front of your mirror if you can, or sit and look into a handheld mirror. Continue the conversation with your inner child that you began yesterday. You could open up with apology, saying something like, I'm sorry, I haven't talked to you over the years. I'm sorry, I scolded you for so long. I want to make up for all the time we spent apart from each other. Number 4, if you haven't talked to your inner child in 50 or 60 years, it may take some time before you feel like you're reconnecting. But be persistent. Eventually, you will make a connection. You may feel the child inside you. You may hear the child inside you. You may even see the child inside you. Number 5, keep your tissue box nearby. It's okay to cry while you are talking to your inner child. Tears will help you to break through and connect with the child inside you. सो जब हमने पिछले, इन माय केस 38 years, इन somebody's case it could be 40 50 60 years. सो अगर हमने इतने सालों में अपने अंदर के बच्चे से बात नहीं करी, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं किया, उसको बोला ही नहीं आई लव यू, तो एकदम से हो सकता है एक दिन में कोई मिरेकल ना हो जाए. लाइक देयर कुड बी अ चांस व्हेन यू डोंट फील एनीथिंग. डोंट वरी, बी परसिस्टेंट. बच्चे जब नाराज होके बैठ जाते हैं तो हम उनको मनाते हैं ना कि कोई बात नहीं बेटा, चलो लेट्स डू दिस, प्लीज मान जाओ, प्लीज गिव मी अ स्माइल. हम उनको ये टॉफी दे देते हैं कभी, या उनको पटाते हैं कि चलो, अच्छा चलो ये करते हैं, अच्छा साथ में वो करते हैं. तो हमें कभी कभी परसिस्टेंट होना पड़ता है बच्चों के साथ में. तो जस्ट इमेजिन करो कि आपका इनर चाइल्ड भी एक वो छोटा सा बच्चा है, वो एकदम कॉर्नर में बैठा हुआ है एंड इज नॉट हैप्पी. इज नॉट हैप्पी व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टिंग विद हिम. हम उसे अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं. अगर हम उसको अटेंशन ही नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? वो खुद उठ के थोड़ी आएगा, वो बैठा रहेगा साइड में. तो आज अगर हम उसको अटेंशन देना शुरू कर रहे हैं, लेट अस गिव इट टाइम. किसी किसी का इनर चाइल्ड एकदम से जंप करके आएगा, किसी का इनर चाइल्ड हो सकता है थोड़ा टाइम ले, बट इट्स ऑल राइट. हमने इतने साल बाद आज उससे बात करी है, या परसों जब हमने बात फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करी थी, हमने पहली बार बात करी है. तो हम धीरे धीरे उसको बनाएं, धीरे धीरे उसको प्यार से समझाएं, धीरे धीरे उसको प्यार से बोले दैट यस आई लव यू. And always remember, the most powerful feeling in this world is love. There is nothing bigger than love. There is the love is the most beautiful, most powerful, most healing feeling we can ever experience. तो अगर हम बहुत प्यार से उससे बात करेंगे, अंदर दिल के डीप इनसाइड से उससे कनेक्ट करना चाहेंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा और वो फील करेगा वो लव फ्रॉम डीप विद इन. And with that feeling of connection from deep inside your heart, your inner child will talk to you, will say I love you to yourself. Will you may even see your inner child from deep within you when you look into your eyes. And for that, be prepared. इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल फीलिंग. और जब आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, इट माइट यू माइट फील overwhelmed with happiness, with joy, with a big smile on your face.
and it could also bring tears to your eyes, खुशी के आंसू of connecting with yourself. So even if you're crying, it's all right, क्योंकि वो एक रिलीज है आपकी inner feelings का. Let that flow. Go with the flow. Don't stop it. The power is within you. Your day 9 journaling exercise. Number 1. When you were little, what did you really like to do? Write down everything that comes to your mind. When was the last time you did any of these things? Too often, the parent inside us will stop us from having fun because it's not the adult thing to do. सो जो भी चीजें बचपन में हम करना पसंद करते थे, हमें अच्छी लगती थी, उन सारी चीजों को हम नोट कर लें और उसके आगे लिखें कि वो चीज हमने लास्ट टाइम कब करी थी. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मुझे डांस करना बहुत पसंद था, तो मैंने लास्ट टाइम डांस कब किया. मुझे बचपन में लाइक कुछ मिसचीफ, कुछ बदमाशी करना बहुत पसंद था. जैसे कोई ऐसी चीज है, मुझे किसी को तंग करना पसंद था, या मुझे कुछ प्लेफुल चीजें, किसी प्रैंक्स करना पसंद था, तो मैंने कब, व्हाट वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई प्लेड अ प्रैंक ऑन समबडी. या मुझे बचपन में कोई लाइक किसी अपने फ्रेंड के साथ में फोन पे बातें करना बहुत पसंद था. जब हम छोटे बड़े हो रहे थे, लाइक व्हेन वी वर इन क्लास 4th 5th, तब फोन्स आए ही आए थे एंड वी टू टॉक ऑन फोन्स. बट हमने अब कितने टाइम से अपने किसी फ्रेंड से बहुत लंबी, मतलब 1 घंटा बात नहीं करी, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम राइट नाउ. सो इस तरह से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको बहुत शौक था और आपने बचपन में यू वर रियली फॉन्ड ऑफ डूइंग, बट आपने नहीं करी, और उनके आगे लिखे कि कब आपने वो लास्ट टाइम वो चीज करी थी. और हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई और नहीं है हमें वो चीज रोकने रोकने वाला करने से. हम खुद ही हैं. हम खुद ही अपने आप को आज के टाइम पे क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये सारी बचकानी चीजें हैं, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू जस्ट रैन अक्रॉस अ फील्ड इन द गार्डन एंड वाज जस्ट रनिंग रनिंग रनिंग, जैसे बच्चे होते हैं ना, गोल 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 गार्डन में घूम रहे होते हैं, विदाउट एनी एम कि कहाँ पकड़ना है, क्या करना है, बस गार्डन में घुसते एकदम फ्रीली भागते हैं. व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी डिड दैट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब हम एक एक स्लोपिंग ग्रास के ऊपर ऐसे रोल 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 करके, लाइक मुझे आई रिमेम्बर, मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगता था ऐसे रोल करके ना नीचे तक जाना. व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डिड दैट? आई डोंट इवन रिमेम्बर. सो हम कभी कभी अपने आप को ही रोकते हैं, अपने अंदर के बच्चे को हम खुद ही दबा देते हैं. अरे ये दिस इज नॉट एन अडल्ट थिंग टू डू, हम खुद ही बोलते हैं. सो हम जब वो चीजें लिखेंगे कि हमें क्या चीजें बचपन में पसंद थी और हमने लास्ट टाइम कब करी, हम रियलाइज करेंगे कि हमने ही अपने आप को रोका हुआ है ये सब करने के लिए, कोई नहीं रोक रहा हमें. Now put down your journal and go outside and play with your little child. Have fun. Do the silly things you loved to do when you were young, like jumping in a pile of leaves or running around the garden sprinkler. Watch other children at play. It will bring back memories of games you enjoyed. If you want more fun in your life, make the connection with your inner child and come from that space of spontaneity. I promise that you will start having more fun. So I firmly remember जब मैंने ये first time book करी थी, after doing this, I just played music, like very loud music, and I was just dancing freely. मतलब बिना किसी सोच समझ के in my room, I was alone and I was just dancing. Just I had so much fun. मतलब मुझे दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं. I just was dancing in my own free way. And it just was so liberating, so free. And आज भी अगर when I'm with the kids, or when I'm just doing something on my own, I try to have some fun with myself, because why should we look for opportunities कि हमारे को कोई बोलेगा तो हम ये करेंगे. नो, वाई? आज हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ स्पॉन्टेनिटी से जिएंगे. हमें जब मन करेगा हम आइसक्रीम खरीद के खाएंगे, हमें जब मन करेगा हम यू नो गार्डन में दौड़ेंगे, हमें जब मन करेगा हम
puddle of leaves में या puddle of water में jump करेंगे. हमें जब मन करेगा बारिश होगी तो हम बारिश में खेलेंगे. हमें जब मन करेगा, हमारा inner child जब हमें कहेगा yes let's have some fun, तब हम अपने अपने मोमेंट को enjoy करेंगे. You know, even while sitting on an office desk, we don't have to be serious all the time. हमें मन कर रहा है कि जैसे हम कोई एक किसी किसी से कोई बात करें, जस्ट एक जोक करें या एक जोक शेयर करें. वी शुड डू दैट. हमें हमें जरूरी नहीं कि हमें हमेशा लाइफ में एक सीरियस माहौल बना के रखना है कि नहीं अब हम अडल्ट हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं और हम हमें हमें वो राइट नहीं है फन करने का. वी शुड ऑलवेज लुक फॉर लिटिल मोमेंट्स टू हैव फन विद ईच अदर, टू हैव फन विद आवर इनर चाइल्ड, to make our inner child feel that yes I can have fun with you, I am a fun person to be with. Otherwise why will your inner child want to be with you? उसको लगेगा अरे ये तो इतना बोरिंग पेरेंट है, मुझे रहना ही नहीं इसके साथ. तो हमें क्या बनना है, हमें वो फन पर्सन बनना है अपने इनर चाइल्ड के लिए, ताकि वो हमारे साथ रहे. Your heart thought for day 9: I am willing to change and grow. You are willing to learn new things because you do not know it all. You are willing to drop all old concepts when they are no longer work for you. You are willing to see your behavior and say, I don't want to do that anymore. You know you can become more of what you are, not become a better person. That would imply that you are not good enough, which isn't true, but more of who you really are. Growing and changing is exciting, even if you have to look at some painful things within yourself in order to do so. Your day 9 meditation, loving your inner child. So, this is a fairly long meditation and it might take us more than 5 minutes to do this. So, be patient and just enjoy and go with the flow. So, I request you all to please sit it in a very comfortable position with your back straight, your legs folded gently or placed firmly on the ground, your palms gently kept on your lap, palms facing upwards, हाथ ऊपर, हथेली ऊपर. With a deep sense of gratitude, take a deep breath in. Gently close your eyes. Relax your face. Relax your body. Breathe in gratitude. Hold for 3. Breathe out gently. Breathe in. Breathe in love. Hold to 3. Breathe out hatred. Breathe in hope, positivity, belief. Breathe out hatred, negativity. Breathe out. Breathe. Relax your body. Relax your mind. Reconnect with your inner self. Look inside you. Congratulate yourself on how amazingly perfect you are. Feel happy on how beautiful you are and how much you love yourself. Tell yourself, I love you. I really, really love you. And I care for you. Now, slowly go back in time
Imagine yourself as a little child of 5 years old. See yourself as a little child of 5 years old. Look how beautiful you are. What a beautiful smile you have on your face. Hold out your arms to this child and say, I am your future and I have come to love you. आप अपने इनर चाइल्ड का हाथ पकड़कर उसको बहुत प्यार से बोले, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ just to tell you that I love you. Embrace this child lovingly and then bring it with you to the present time. See the two of you standing at a mirror, looking at each other lovingly. And as you stand there, become aware that there are so many parts of you that are missing. अपने inner child को अपने साथ अपने present time में लाकर साथ खड़े हों और अपने मिरर में देखें and see कि आपकी लाइफ में क्या है जो मिसिंग है. Now go back in time even further to the very moment you were born. You've just come down the birth canal. It may have been a difficult trip. You feel the cold air and see the bright lights, and someone may have just smacked you. You have arrived. You are here to live a whole lifetime. Love that little tiny baby. Love that little baby that you are, जो अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया है, जिसने अभी अभी आंखें खोली हैं, जिसने अभी अभी इस दुनिया में एयर फील करी है, लोगों को देखा है, एक्सपीरियंस किया है लव अपने आसपास. उस छोटे से प्यारे से बेबी को बहुत सारा प्यार दे. Now move forward in time to the moment when you began to walk. आप खड़े होते थे और गिरते थे जब चलना सीख रहे थे. खड़े होना, गिरना, फिर खड़े होना, फिर गिरना, फिर खड़े होना, फिर संभलना, और एक दिन अरे वाह, आप चलने लग गए, आप चल रहे हैं. You are walking so confidently and you take one step after another. Wow, so beautiful, so wonderful. You are so proud of yourself. Love that little child who just learned how to walk. Lots and lots of love to that little child. So proud of you, so proud of you. And then move forward in time to your first day at school. हो सकता है आपको स्कूल जाने का मन ना हो, बट आपकी मम्मा ने आपको स्कूल ड्रॉप कर दिया. हो सकता है आपको स्कूल जाने का मन बहुत हो और आप अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में बहुत एंजॉय कर रहे हैं. यू हैव टेकन योर फर्स्ट स्टेप्स ओवर योर थ्रेशोल्ड ऑफ योर स्कूल. हो सकता है आप थोड़े से डरे हो सकता है बहुत एंजाइटी हो, और आप ब्यूटिफुली अपने स्कूल में बैठ गए हैं और बच्चों से बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. You are having so much fun in your school. Lots and lots of love to the child who has just started learning, who has just begun the life of learning. Lots and lots of love to the new learnings of our life, to the new learnings of that little child.
then remember your life around the age of 10 and everything that was going on then. It may have been wonderful. It may have been difficult. You were doing the very best you could to survive and you made it. 10 years of age के आसपास आप क्लास 4, 5, 6 में हैं और आप उस लाइफ में धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि आपकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज में खुशी मिलती है और आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने सारे काम खुद कर पा रहे हैं। आप हो सकता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, बट you have done your best because at that time you did not know. You did not know enough. You were still discovering, still exploring, but you did your best. You did your so wonderfully best and you did it so well. You are so proud of the 10-year-old yourself. Love that child. Just love, love, love. Now go forward to the time you were entering puberty and remember all that was going on in your teenage life. It was exciting and scary sometimes. Maybe you could not handle a few things, but you went through it so beautifully. You are such a beautiful teenager. You did the best that you could, and you love that teenager inside of you. You love the love and excitement that was inside of you, and you were so full of curiosity, so full of beautiful moments in your life. Remember that first little crush. Remember the first feelings of butterflies in your heart. How beautiful. Love your teenager yourself. Love that little teenager. Lots and lots of love. Go to the time of your first job and how exciting it was to earn money. You wanted so badly to make a good impression, and there was so much more to learn. And you did your best. You succeeded. You did so wonderfully well in your first job. थोड़ी बहुत problems आई, yes, but that's all a part of learning. आपने हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी में बदला और आगे से आगे बढ़ते चले गए। अपनी पहली जॉब को इतना एंजॉय किया, उससे इतना लर्न किया, आपको आज भी वो दिन अच्छे से याद है और आप बहुत खुश हैं कि आपने अपनी लाइफ का एक पहला ऐसा पड़ाव पार किया जिससे आप मनी अर्न कर रहे हैं, बिकॉज टुडे यू आर सेल्फ सफिशिएंट एंड यू डिड योर बेस्ट. Love that person. Just love that person. Remember the first time you were rejected in love and how much your heart hurt. You were sure no one would ever love you again. You were in such pain. You did the best you could and you made it. Love that person. Love that person. जब पहली बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ तब आपको लगा होगा कि मुझे अब शायद इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करेगा, बट here we are. हम उस पेन से गुजरे और विक्टोरियसली बाहर निकले, बिकॉज वी आर born to be beautiful, we are born to be loved, and we love that person inside of us. Then go to another milestone in your life. It might have been embarrassing or painful or wonderful. Whatever it was, you were doing the best that you could at that time with whatever understanding, knowledge, and awareness you had. Love that person. हो सकता है आपके साथ लाइफ में कोई ऐसी चीज हुई हो जिसको लेके आप अभी भी दुखी होते हैं,
एम्बैरेस्ड फील करते हैं या पेनफुल फील करते हैं। हो सकता है वो चीज आपके कंट्रोल में ना हो, बट दैट्स ओके। आप उस सिचुएशन से बहुत ब्यूटीफुली बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड की जर्नी में हैं। आपको पता है कि वो सब पेनफुल एक्सपीरियंसेस वो खत्म हो चुके हैं, वो पास्ट है, और आप बहुत ब्यूटीफुली उससे बाहर निकल चुके हैं with whatever little understanding, knowledge you had at that time. You did your best. You were amazing, and you loved that person who went through all of that. Lots and lots of love to that person. Now gather all the many parts of yourself and bring them forward to the present. अपने सारे पार्ट्स बचपन से लेके आज तक, अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपनी सारी धारणाओं को लेके आज हम इकट्ठे खड़े हैं और आगे देख रहे हैं। अपने मिरर में अपने आप को देख रहे हैं। See yourself standing in front of the mirror with all of yourselves and realize that you are looking at the richness and fullness of your life. हमारी लाइफ इतनी रिच, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी वंडरफुल है। हमें कितने सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस मिले हैं और हम कितने ब्लेस्ड हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल। Of course, there were difficult times and painful times and embarrassing times and times of confusion. But that's all right. That's all a part of life. Love all of yourself. Love all of yourself. All of yourself. Now turn around, and as you look ahead, see a person standing before you with arms wide open and saying, I am your future and I have come to love you. धीरे से पीछे मुड़े और इमेजिन करें आपके सामने कोई खड़ा है और अपने आर्म्स वाइड ओपन करके आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आ गले लग जा, मैं तेरा फ्यूचर हूँ and I am here to love you. I have come to love you. Life is an endless opportunity to love yourself, love your past, love your present, and your future. Loving and accepting every part of yourself is healing. Imagine करें कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को जाके टाइटली हक कर रहे हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल जादू की झप्पी दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि यस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी है टू लव योरसेल्फ। Loving and accepting every part of yourself is the true healing. How can you possibly be whole or healed if you reject any part of yourself? Healing is to make yourself whole again. Love yourself, every part of yourself, and be whole. आज हम अपने हर पार्ट को, अपने पास्ट के हर एक्सपीरियंस को हम बोल रहे हैं, यस आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। आज मैं होल एंड कंप्लीट हूँ। मेरे लाइफ के छोटे 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 पार्ट्स, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस मुझे पूर्ण और संपूर्ण बनाते हैं और आज मैं संपूर्ण हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। All is well, and so it is, and so it is, and so it is.
With this beautiful thought, come back to where you are. Gently bring your attention to your surroundings, to the room where you're sitting. Give lots and lots of thanks to your inner child for letting to love you. Lots and lots of love to your body for allowing you the beauties and pleasures of life. Thank you, thank you, thank you. Gently fold your hands together, rub your palms. Lots of energies flowing into your body. Beautiful waves being generated from within you, completely filling your surroundings, your room. With this beautiful energy, put your arm, put your hands on your face, your eyes. Gently rub your hands all through your body, touching your neck, your shoulders, blessing your hands, your spine, your back, your lower back. Massage your legs gently, your stomach, your lungs, your heart. Thank you, thank you, thank you. Thank you to your beautiful body, your beautiful mind. Ambadnya, Ambadnya, Ambadnya. Gently open your eyes. Thank you, ma'am. Abandya. Thank you, Mitu. Thank you. I hope everyone was Thank able to you. imagine their little child. पूरी लाइफ घूम गई. It's a beautiful meditation. मुझे बोलने में ही इतना मजा आ रहा था. आई एम श्योर आप लोगों को सुनने में बहुत, मतलब इमेजिन करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा. Great. Yes, Wonderful. ma'am. Excellent. With this beautiful feeling, let's have fun today. Let's have a great day, everyone. Ambadnya, Ambadnya, Ambadnya. Abandya. Thank you, Ambadnia.